Today I am going to teach the subject non-conventional energy resources. Non-conventional energy resources. So today I have chosen this subject because I have also been teaching in my university the same subject, and hopefully I thought that in most of the universities, to students of final year and pre-final years must be studying all branch of engineering, must be studying these non-conventional energy resources. This is first time I am creating some online lecture video classes, so hopefully in forthcoming videos you would be must see an enhanced quality of lecture. So now today, to begin with this point of topic, because I have thought that from last 2-3 months I've been not in touch with my students, so I am creating this video in a very precise and summarized manner. We would not be talking into very details, and this video will consist of this entire course of non-conventional energy resources will consist of nearly 10 videos hopefully, out of which in every unit there would be 2 videos of each part. The unit has been divided into 2 parts in our syllabus, so we would be taking one video for one part and another video for another part. So it will be total a playlist of 10 videos, which will be very easy, and in the end of the lectures we would be discussing the points to remember what we have got from this entire lecture, that would be discussed or noted at the last of the lecture. So let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की. सबसे पहली बात, एनर्जी क्या होती है. एनर्जी से हम क्या समझते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी. ओके, here we are talking about the energy. Every piece of object, everything whatever possess a shape, size and structure possess some energy also. But here we are talking about energy resources, means there are certain substance which has got enormous amount of energy. Upon burning they produce enormous amount of energy. Like for example, if you would burn a kg of coal and you would burn a kg of wood, both have same mass, but both will liberate different amounts of energy. What happens actually, the energy content, or you can say the calorific value of coal is much higher than that of wood. Simply there are different materials which possess higher amount of energy. So here we are talking about non-conventional energy resources. First thing is there to understand what do you mean by conventional. What is conventional? You could say Hindi में conventional is like पारंपरिक. Conventional is what? Like पारंपरिक in Hindi, or you could say traditional. Okay, so you could say traditional. So here we are going to discuss non-conventional energy resources. What are these non-conventional? Non-conventional means ऐसे energy resources जिसे हम अभी तक इस्तेमाल नहीं करते थे और अब आने वाले समय में उसका इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ रही है किसी भी सब्जेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ हमें ये सोचना चाहिए कि वाई, हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस बिकॉज इन प्रेजेंटली we have different kind of energy requirements. Like we need gas, LPG cylinder, or kerosene you can say, or electricity you can say, for in our house, for cooking, for operating certain equipments like iron, stereo system, washing machine, and all the different sort of small or big appliances we used to operate. So in that course of thing, in traveling we use energy, in shopping we need energy, because as we go into the shopping malls or shopping markets or any shops, there people use electricity for air conditioning or lightening of their buildings. So for their different purposes where electricity is, or you can say energy is required. So we could also say that one of the most convenient source of energy is electricity.
if any source of energy is being converted into electricity, it becomes easy to transport it, because there is a certain challenge to hold energy in a particular, you can say you cannot hold the energy artificially, is much typical, very typical task. So if that energy is converted into electricity form, it could be easily processed from one place, it could be easily transported from one place to another. So here what we do in case of non-conventional energy resources, we will mostly discuss the new source of energies. So why we are going to discuss, why is it required to study non-conventional energy resources? There are certain problems due to which we are bound to focus on non-conventional energy resources. In the present scenario, in India, in our Indian country, most of the electricity is generated from coal. More than 50%. More than 50% of energy is generated from coal. As we all know, coal, petroleum, gas, all these are what are these? These are fossil fuels. What are these? These are fossil fuels. And we also know that in current scenario, in present situation, these fossil fuels are not being prepared by the nature in current geographical cycle. It has already been prepared previously, and they have been reserved in certain mines, or you can say wells. The crude is being reserved. That crude is processed, or that coal is excavated from the mines, and then it is processed and made ready to use, where we use in our thermal power plant, we use petroleum in our vehicles and all that. So basically, when these fossil fuels are burned, an enormous amount of pollutants are released. The main cause of you can say in last few months, if you talk about India also, we have seen several problem of in smog or in pollution in metropolitan cities like Delhi and Noida and Ghaziabad and some areas of Punjab. We have seen that there is a deposition of certain soot particles in the atmosphere. So where are these soot particles coming from? Some of them are coming from you can say, as people say that farmers do burn their rest amount of the harvest what they have already removed from the field, and most of the but I think most of the part is coming from the fossil fuels that are burned in certain thermal power plants, in certain industries, the gas, the petroleum that is used by vehicles, by different machineries, that causes enormous amount of pollution. So the major reason for to focus on non-conventional energy resources is pollution. Secondly, greenhouse effect. Greenhouse effect is also one of the major consequences of using fossil fuel as a source of energy. Actually, all these fossil fuels have hydrocarbons in them. You must be knowing hydrocarbons. Hydrocarbons are the combination of hydrogen and carbon, which upon burning release carbon dioxide in carbon monoxide in enormous quantity. So these hydrocarbons, when burned, they liberate a lot of greenhouse gases, which causes greenhouse effect. This greenhouse effect is a direct consequence for global warming. This greenhouse effect is very much responsible for global warming. You must all be knowing about global warming, or in coming lectures we will be discussing this in very brief. So these are the major challenges, and due to all this, the entire globe, due to all these phenomena created by the entire globe is facing a problem that is known as climatic change. That is known as climatic change. You all must have also noticed that in previous years, recent very 2 or 3 or 4 years,
You must have also noticed that in rainy season we don't we don't get plenty of rains, and in winter season we get a lot of rain, or in summer season we don't get sufficient rainfall, so that there is a problem of water runout. Means there is a you can say there is a kind of disturbance in the entire ecology, as we have interfered the several processes of nature, and we have contaminated the environment. That is why it is believed that all these pollution and these elements are the causes of climatic change. So those places where it was not likely to rain heavy in a particular season, there it is a heavy there is it is found that there it is heavy rainfall in any particular season or in that particular area. Whatever. So next we are going to next we are going into the introduction section of this non-conventional. Now begin with general introduction to NCR. Although previously I have given some basic introduction, and you can say a very rough idea. So here to begin with, first I would like to make clear that what are the conventional energy resources and what are the non-conventional energy resources. So here we will mention conventional as well as non-conventional energy resources. So students, this non-conventional energy resources is also abbreviated as NCER. It is also called as NCERs in short form. So we would be using this word also, NCER, for our convenience. So here I have classified conventional and non-conventional type of energy resources. So conventional, as I have already told you, what are conventional energy resources? That energy resources which we have been using previously from the very dawn of the beginning of the civilization for different purpose. So let's begin with cow dung cake. Cow dung cake is also a source of energy, wood. Else we are using kerosene oil. We are also using petrol. We are using gas. We are using coal. And what we are using? You could also say in some very tribal areas, people are also using dried leaves and or agriculture waste also as a source of energy. Agricultural waste in rural areas for burning purpose in winter season, or during the winter nights they use agricultural waste to remove different insects and all that. So that is a different thing. So basically cow dung cake is used for cooking purpose in rural areas. Wood is also used in rural as well as urban areas. Kerosene is used as a fuel for cooking and for lighting of houses. Kerosene, mitti ka tel. Petrol, we all know, is used as a fuel in bikes and cars. Gas is also used as a fuels. Coal is not majorly used as fuel in past. As we go in previous time, we could say that we have heard about steam engines. Steam engines at that time, in the beginning of the discovery of the railway, the steam engine was operated by coals. Agricultural waste in those people who belong to rural areas, they must have seen the agricultural waste. What are agricultural waste? Like you can say dried leaves, सूखे हुए पत्ते, या फसल का जो बचा हुआ पार्ट होता है, जैसे हम पराली या पोला कहते हैं, उसे भी जला के, या भूसी जो दानों में से भूसी निकलती है, उसे भी जला के लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. तो ये वो सारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो आज तक हम यूज करते आए हैं. So one thing that is very common in all of these conventional energy resources, that they have a residue. Whenever there is a residue, that residue is a cause of pollution. Like you can say, when we burn something, the energy is liberated from it, or you can say when anything burns, smoke is released, or some ash is left as a residue after burning. So here we can say anything that liberates smoke is directly or indirectly
or anything that leaves residue post burning, that is also directly or indirectly responsible for pollution. So in all these conventional energy resources, you will find that there are some residual material left or liberated during burning of all these of the material. Or there are emission of certain gases, certain greenhouse gases or certain harmful gases which are harmful to us as well as the environment. So now let's talk about non-conventional energy resources. One of the major energy content or you can say energy potential is in solar energy, sun, that is obtained from sun. तो जो सन है, ऐसा कहा जाता है कि सन इज द ultimate source of energy, means all these energy resources that are available to us whether it be wind energy, whether it be tidal energy, all these are created or regularized due to sun. Like wind blows when there is a pressure difference, when a wind blows from one pressure area to another pressure area, when there is a pressure difference, then wind blows, or you can say entire system or entire ecosystem is being balanced by the energy of sun, because the routine of the sun is very regular in our atmosphere. So these are non-conventional energy resources. I would be explaining them later on in briefly in different units of your subject. So here are a few non-conventional energy resources like solar energy, wind energy, tidal energy and hydroelectricity. So these are conventional and these are non-conventional energy. So non-conventional are solar energy, wind energy, tidal energy, hydroelectricity. You must be well known about hydroelectricity. Next comes is geothermal energy. Okay. Next is magnetohydrodynamics. This is basically not a energy resource, but this is a scientific. There is a concept by means of which we generate energy. But also this is a non-conventional energy resource. Means previously we had not been using this technology to produce electricity. Next is your biomass. Okay. So in biomass, from biomass we could generate we could generate energy in 2 or 3 forms. So here are the conventional and non-conventional energy resources. Next we will be talking about the classification of the energy resources. The classification of energy resources. Just wait. Of energy resources. बस ढीला है इस वजह से ये चल नहीं रहा है. Classification of energy resources. See, all this type of available energy resources is in India has been classified on the basis of their uses and availability in the market. So we could say there are primary energy resources, secondary energy resources. Okay. Next is commercial energy resources. Another one is non-commercial energy resources. Next is renewable energy resources, and next is non-renewable energy resources.
Now this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 different types of energy resources in which all these energy resources are being classified. You can say very easily classified. There is not very strict definition. So I would be explaining these all 6 type of energy resources, their classification one by one. First one is primary energy resources. तो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज जनरली हम किसे कहते हैं? प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स उसको कहते हैं जो कि रॉ फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल कोल इज अवेलेबल इन द माइंस in the raw form from there it could be used. So coal is a primary energy resource, or you can say natural gas is a primary energy resource, or you can say wood is a primary energy resources. ठीक है. अब इसके बाद बात आती है सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज की. सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज हमारे वो होते हैं जिसमें कि हम प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करके उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में. लाइक फॉर एग्जांपल जो थर्मल पावर प्लांट हमारा होता है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम कोल को बर्न करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो एनर्जी एंड कोल इज ऑल्सो a source of energy. So what is done here? The primary energy resources has been utilized to convert into secondary energy resources. So here electricity is a type of secondary energy resources. Say now next is commercial energy resources. Commercial energy resources क्या होते हैं? वो energy resources जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर सेल या ये कहें कि जिनका कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया गया है. लाइकवाइज कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे ये जो आपके एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनका सेल कौन करता है? इंडिया में इनका सेल गवर्नमेंट करती है. गवर्नमेंट ही इनको एक्सकवेट करती है, गवर्नमेंट ही इनको रिफाइन करती है. ये सारी चीज़ें बेसिकली रिफाइन होते आपके निकलती हैं क्रूड ऑयल से. तो क्रूड ऑयल से ऑलमोस्ट निकलने वाली सारी चीज़ें कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज में आती हैं क्योंकि उनका प्राइस भी गवर्नमेंट ही तय करती है और ज़्यादातर इनको डायरेक्टली यूज़ करने के लिए खरीदा जाता है. या तो इनसे बिजली बनाई जाती है या तो इनसे गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, मशीनरी चलाई जाती हैं, जो भी किसी उद्योग धंधे में जो भी इस्तेमाल इसका किया जाता है. तो वो सारे एनर्जी रिसोर्सेज जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर सेल, ऑल दोज आर टर्म्ड एज कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज. नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिनका कॉमर्शियलाइजेशन नहीं किया गया, मतलब जिनका कोई रेट बाजार में तय नहीं होता. एज अ फ्यूल, एज अ एनर्जी रिसोर्स उनका बाजार में कोई रेट तय नहीं होता है या गवर्नमेंट की कोई रेगुलेटरी नहीं है उस पर. उसको हम कहते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज. जैसे आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं काउडंग केक हो गया या आपका वुड हो गया या कोई इस टाइप का वुडन कोल हो गया. आप इस टाइप की चीज़ें आप इस पर इंक्लूड कर सकते हैं. कोई एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे मैंने बताया था कि धान की भूसी हो गई या कोई एग्रीकल्चरल मटेरियल बचा हुआ पार्ट हो गया किसी प्लांट का या ऐसी चीज़ें हो गई. तो वो किस आफ्टर नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज नेक्स्ट कम्स नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज एनर्जी रिसोर्सेज विच वंस एग्जॉस्ट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड. मतलब ऐसे एनर्जी रिसोर्स जिन्हें एक बार इस्तेमाल कर लिया जाए या उसका भंडारण अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो उसे दोबारा अपने आप इकट्ठा नहीं किया जा सकता या उसे अपने आप बनाया नहीं जा सकता है इतने कम समय में. और दूसरा है आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, यानी ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो कि स्वतः ही दोबारा रिन्यू हो जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं या उनका भंडार इस तरीके से क्षय नहीं होता है. ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं. और वी कैन से एक दूसरे तरीके से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिनका कंजम्पशन ज़्यादा रेट पे हो रहा है और उनका प्रोडक्शन यानी वो हमारे वातावरण में कम रेट पे कम गति से बन रहे हैं, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है. कौन से? वो एनर्जी रिसोर्स जिनका कंजम्पशन हाइयर रेट पे हो रहा है और प्रोडक्शन लोअर रेट पे हो रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल कोल या फॉसिल फ्यूल्स आप कह सकते हैं, पेट्रोल, गैस,
कच्चा तेल, जैसे हम अक्सर न्यूज़ में कच्चे तेल के बारे में सुनते रहते हैं, तो वो कच्चा तेल क्या है, ये सारी चीज़ें एक रिजर्व में हमारे पास इकट्ठा हैं और एक लिमिटेड क्वांटिटी में, जो कि एक समय के बाद निश्चित ही समाप्त हो जाएंगी, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि नए भंडारण इनके मिल नहीं रहे हैं। और हमारी अर्थ का जो इस टाइम ज्योग्राफिकल फेज चल रहा है, उस ज्योग्राफिकल फेज में भी ऐसा माना जाता है कि ये फॉसिल फ्यूल्स क्रिएट या जनरेट नहीं हो रहा है। जब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, तो वो एनर्जी रिसोर्स है जो कि समय के साथ दोबारा रिप्लेनिश हो जाते हैं, या हम कहते हैं, इनको कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो कि खत्म नहीं होंगे। जैसे आपका सोलर एनर्जी मीन्स ऐसा बिलीव किया जाता है कि जब तक अर्थ पे लाइफ रहेगी तब तक सन रहेगा, या वाइस वर्सा, ठीक है। विंड, जब तक लाइफ रहेगी अर्थ पे तब तक विंड रहेगी, तभी लाइफ है। सोलर है तभी लाइफ है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्जॉस्ट नहीं होंगी। टाइड्स आएंगे ही अगर सी का एग्जिस्टेंस होगा, बायोमास जनरेटिव होगा अगर हम एग्रीकल्चर करेंगे, अगर हम रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो बायोमास हमारा जनरेट होना ही होना है। तो कहने का मतलब ये एक आपका क्लासिफिकेशन हो गया एनर्जी रिसोर्सेज का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एनसीईआर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसकी अवेलेबिलिटी है, और क्या इसकी हमारा अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन एनर्जी रिसोर्सेज का एक मोटे तौर पे, ठीक है। होपफुली आप लोग समझ ही होंगे। प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज यानी वो एनर्जी रिसोर्सेज जो कि जिस फॉर्म में अवेलेबल है। सेकेंडरी, जब उन एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उसको दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज मतलब वो एनर्जी रिसोर्सेज जिन्हें कॉमर्शियलाइज कर दिया गया, जिन्हें मार्केट में अवेलेबल करा दिया गया है एक पर्टिकुलर फॉर्म में बेचने के लिए। और नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज मतलब वो एनर्जी रिसोर्सेज जो कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है। नॉन रिन्यूएबल आप समझ ही गए, रिन्यूएबल समझ गए। नॉन रिन्यूएबल वो हैं जो कि एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सॉरी। और रिन्यूएबल वो हैं जो कि एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, दोबारा ही समय के साथ बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अभी ये कुछ मैंने अरेंजमेंट किया है, इस तरीके का एक रोल अप बोर्ड का अरेंजमेंट किया, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो होपफुली आने वाले टाइम में हम लोग और अच्छे से करेंगे, ठीक है। इस यूनिट में अभी एक मेजर पार्ट आपका सोलर सेल्स का रह गया है, और इसके आपका एनसीईआर के की जो अवेलेबिलिटी है एनर्जी का, जो प्रेजेंट सिनेरियो है इंडिया में आज के टाइम में, आने वाले लेक्चर में हमारे सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे किसी भी टाइम पे कोई भी स्टूडेंट कांटेक्ट कर सकता है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, या आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं hementchandh@gmail.com, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने एक कोशिश की है स्टूडेंट टीचर के बीच में जो गैप हो रहा था लॉकडाउन की वजह से, कि स्टूडेंट टीचर के बीच में कोरोना वायरस ना आने पाए, ठीक है। उसके लिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, स्टडी इन हैंड्स। आज मैं पहला लेक्चर अपना अपलोड करूंगा इस पर होपफुली। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए, ठीक है। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अवेलेबिलिटी of NCERs, non-conventional energy resources, present energy scenario in our country India. Next we would also discuss some part of solar energy in this unit. So this was part 1 for unit 1. Now in part 2 we would be discussing the rest of the part of this unit. Thank you very much.